Everyone, we are solving some questions which have been asked in the AKTU examination. So, ये array index formula का एक numerical है. Suppose a multi-dimensional array P and Q are declared as P minus 2 से 2 and 2 से 22 and Q 1 to 8 minus 5 to 5 minus 10 to 5 stored in the column measure order form. So we have to see it very clearly that these are in the column measure order form. Find the length of each dimension of P and Q, number of elements in P and Q, assuming the base address to be 400 and w equals to 4 means कितने bytes एक number लेता है memory में. Find the effective indices e1, e2, e3 and address of the element q333. So ये सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि dimensions की length find करते हैं. Dimensions की length को find करने के लिए जो पहला dimension है p के लिए हम इसको solve कर रहे हैं. तो p के लिए पहला dimension है upper bound minus lower bound plus 1. So this is equals to 5. P के लिए जो second dimension है that is equals to 22 upper bound minus lower bound and then plus 1. So this is equals to 19. So length of each dimension of P and Q is 5 and 19. Sorry, this will not be 19, this will be 21. Extremely sorry. Okay. Now Q के लिए find करते हैं ये चीज. Dimension 1 in the Q will be upper bound minus lower bound plus 1. This is equals to 8. D2 second dimension 5 minus 5 plus 1. Upper bound minus lower bound plus 1. So this is 11. Then D3 is equals to upper bound minus lower bound plus 1. This is equals to 16. Number of elements in P and Q. ये सेकंड क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन का आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं डायमेंशन. अब हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P. So number of elements in P will be equals to D1 into D2. So this is equals to 5 into 21. It means 105. Q में कितने elements होंगे? D1 multiplied with D2 multiplied with D3. This is equals to 8 multiplied with 11 multiplied with 16. So 88 multiplied with 16. 16 8s are 128. 16 8s are 128 and 12 140. So 1408 will be total number of elements in Q. If I have made any mistake in calculation, you please do the calculation by yourself. I may have made some mistake in the multiplication. थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बेस एड्रेस है वो 400 है. सबसे पहले हमें इफेक्टिव इंडिसेस फाइंड करना है. E1 इज इक्वल्स टू माने Q के लिए रेस्पेक्ट टू फाइंड Q के 3 इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है. सो इफेक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड. सो 3 minus minus 2. The effective index 1 will be equals to 5. Then effective index 2 will be equals to, once again this is 3. So 3 minus second lower bound is, sorry, just made it just as small. So effective index 1 will be equals to E1, effective index E1 will be equals to 3 minus the lower bound is 1 and this will be equals to 2. Effective index 2 will be equals to upper bound minus lower, current index 3 minus the lower bound. Second dimension का जो lower bound है वो -5 है. So this will be 8. Effective index 3 will be equals to 3, which is this dimension minus lower bound is -10. And then this will be equals to 13. अब हमें एड्रेस फाइंड करना है Q333 का. इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. फॉर्मूला इज इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस वी स्टार्ट विद द थर्ड डायमेंशन. सो E3 मल्टीप्लाइड विथ डायमेंशन 1 इंटू डायमेंशन 2 प्लस E2 मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड डायमेंशन को गायब करेंगे, सेकेंड डायमेंशन को मिस करेंगे, दैट विल बी D1 एंड देन लास्ट डायमेंशन E1, फर्स्ट डायमेंशन E1. दिस मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय
single element. So base address is 400 plus E3 is equals to 13, D1 and D2. D1 is 8, D2 is 16 plus E2. E2 is 8, we have calculated it, multiplied with D1. D1 is 8, E2 is also 8 and D1 is also 8 plus E1. E1 in this case is 2, whole multiplied with 4. So this is equals to 400 plus 13 into 128 plus 64 plus 2 multiplied with 4. So 128 multiplied with 13, 104, 36, this is 1664. So 400 plus 1664 plus 64 and then plus 2 multiplied with 4. So 1664 plus 66, 0, 3, 1730. So 1730 multiplied with 4. So this will be 6920. If you add 400 in this will be 7320. So this is the address of the given element. So now you have seen that we have solved this problem easily. Yes, ये calculation में numerical data में मेरे से mistake हो सकती है, but the formula is correct and you can apply the formula like this only. Thanks for watching this video.